you have to bowl to David Warner. What are the 3 things that you need to do to get him out? Temper the ball a little bit and get it to reverse. मैंने सुना है आप सफेद टी-शर्ट पहन के आए थे जो गुस्से में लाल हो गई है, क्या सच है? सच है, लेकिन कोई तो ट्रॉफी आई है। अब जुलाई में एक और ट्रॉफी वो उठाएंगे और अगले साल कप नम दे। क्या बोला आपने? अगले साल कप नम दे। अच्छा मुझे लगा कप रख दे। आप ऐसे देख रहे हो तो अंपायर नो बॉल को नहीं देखता जैसा आप मेरे को देख रहे हो यार। और यूं लग रहा है आपने सुशी ऑर्डर किया और सत्तू आ गया हो क्या? What is this? Hello and welcome to the last and final episode of the LBW show. My name is Vikram Sathe and what a match it was. The Mumbai team is the Indian T20 League champion. You know, everybody was praying yesterday, but clearly the Mumbai gods were way too powerful than the Chennai gods. But you know what? If you were God yesterday and 3 Ambanis were praying, you had no option but to give them the cup. You don't mess with the strongest in the country. And in a match where Dhoni gets run out, you anyway know that the stars are not aligned in your favor. You know, if I was the Indian captain Virat Kohli, of the Indian cricket team obviously, I would wrap Jasprit Bumrah in cotton, give him 4 massages a day because you know he's going to win you the World Cup. What a bowler this guy is. Lots of fun and excitement in the last episode of the LBW show presented by Bodog, your one-stop destination for amazing sports content, fun prediction games and lots more. Now it's time to call one of India's finest bowlers and somebody who was forced to be a Chennai fan. Please welcome Ajit Agarkar. Hi Ajit. Thank you, Vikram. Welcome for the final. One last time. Yes, one last time. I know it was a tough evening for you yesterday, Mumbai versus Chennai, and I believe you were forced to be a Chennai fan. Was that true? I mean, I'm usually neutral. It's much easier that way. My son was supporting Chennai, so felt for him. He called me about halfway into that game into Chennai's chase and said, you know, you're sure, right? They're winning because I want them to win. Unfortunately, couldn't. Fell short by 1 run. Absolutely. Great game though. Great advert. Mumbai was superb. Mumbai was superb. Lots of mistakes in the game from both teams. Very unlike both teams. But both were trying to help each other stay in the game. But eventually Mumbai made less mistakes. I think 1 less mistake. Maybe. 1 less mistake. But what was going on with the fielding? Not sure actually. Maybe nerves. Maybe they wanted to make it a close game. Yeah. I think Chennai at the midway stage, 150 to chase, would have taken it hands down. And when one guy gets 80, you still don't end up winning. Must be heartbroken. I'll put you on the spot. But the better team won. Yeah. I'll put you on the spot. Was it a run out or not? I think so. I think so. Brave decision. You know, I felt for Nigel Long at that time. That was a Dhoni, long time he took to make a decision. Yeah, about 32 minutes. So I think you probably have a situation now that there'll be 4 cameras. On this camera, it's out. This is not out. Now let's do a poll. Yeah, it was a great call though, because from one angle it felt like he might have just gotten over the line, but I think in the end the right call was made. I don't know how he's made it, especially with it being MS Dhoni, but he's made the right call. Superb. So it's time to do what we do numbers, best. Is it? Okay. Numbers, yes. The number on the grade is something that you need to select, and then we go. We'll go for the first one, 8. First one, 8. Yeah. Number of finals Chennai has reached in 10 seasons. What is about this team? It's just unbelievable. You know, I think what we should do is just allow them to reach the finals right from the beginning. So much of man hours wasted. So many people are watching these matches. Just make it simple, right? You know, if you're going to crack the polynomial equation, then go in 8 standard. Why do you need to study kindergarten? You know, normally I would have said, you know, it's sport, it's different, but you're right. You know, frankly, this team shouldn't be doing as well as they are. They just find a way to win. I think Dhoni said after the game that you know, this year the performances haven't been exceptional, but we've managed to win, and that's why he likes these experienced guys. Apparently they don't have meetings. You just go play, you turn up, you know your roles, you find a way to win, and that's it. It's incredible. Is it something to do about this culture of cricket teams, like what they say? Fleming doesn't talk. He's on the back foot. I mean, he's saying it from the backside. Then there is MS Dhoni who doesn't interfere. The owner, Srinivasan, doesn't interfere. If nobody's interfering and still you're winning, means something you're doing right? Yeah, they found a formula. I think I always believe if you have a nice Indian setup or Indian players good enough, you know, they've had it since day one, then it becomes easier to fit the overseas pieces. You look at Mumbai as well. You know, they have great set of Indian players. Just becomes, you have a larger pool of overseas players to pick from. But you're right, the culture, you know, just easy going,
I think Hayden was with them, just used to go surf a lot of the times. Use instead the of, mongoose bat yeah. also once. I mean, they're doing everything right, but They just make less mistakes. Unfortunately, in the finals, they made far too many. But they just make less mistakes than most other teams. Make the right decisions in clutch situations. There's always one guy who stands up for them, who's most unlikely to. It must be nice for Fleming. so now let's look at a situation next year's T20 league. Imagine no Dhoni. I'll put you on a spot. What should the Chennai team do if there is no Dhoni, and is the Chennai team good enough without Dhoni? Maybe take a break for a year or two. I think- Suppose you were the captain of Chennai, what would you do next year? Oh, it's a difficult one. If I was a captain of Chennai, I mean, I'll convince Dhoni to play for another year. But it's a difficult one. I mean, I was looking at it yesterday, and if he doesn't play, Suresh Raina looks like the immediate replacement. You don't quite know what Suresh Raina is going to turn up next year. He's not had a great season this year. You're a year older, becomes difficult, but there's no doubt. I think giving credit to one person, but with this team, I don't think they can function as well without Dhoni. I think if he does not play, we'll suddenly find that with this team at least, they can't do as well as they are doing at the moment. So Ajit, it's time to go to the next number on the grid. Let's pick the biggest one, 692. Oof, 692 is the number of runs David Warner has scored in this season of the T20 league. What a player this guy is. In the last 5 seasons, he's averaged 500 runs and above. Means you can understand the consistency here. The season average of 69.2. And it's very interesting, the psychology of taking breaks in cricket. We always say that you need a break in cricket, but you have a break in cricket, you get a Smith. And you have a break in cricket and you get a Warner. So what is this psychology and what makes David Warner special? And that's what makes team sports such a nice place to be, having been part of one. You get different characters who react to the same situation so differently. One doesn't care. That's not the case. I'm sure it's affected him. But it's affected Steve Smith a lot more, and maybe different styles of players as well. I mean, Steve Smith, as talented he is, and was probably the best batsman in the world when the controversy happened. Took a little bit of time, or maybe his game is built in such a way that sometimes takes a little bit of time. Warner just supremely talented. I mean, I played with him for Delhi, and you could see the bullish nature in his approach to batting. One, he doesn't have any weaknesses, whether it's against pace or spin. Yeah, and cricketing shots. Yeah, you look at even a off spinner, if the ball's turning away from him, there's no real weakness. He can still play through the offside, which is very unlike a lot of overseas players. In Hyderabad, especially during the T20 league, he's received a lot of love, lot of affection from the people. It will be interesting when he comes back. How will he perform when he's playing for Australia? Because the English are not going to give him a reception that the Hyderabadis gave him. At the worst possible place to come back for Australia. Exactly, for Australia. So my sense is he will struggle playing for Australia, at least for some time till he acclimatizes to what he's going to hear in England. I have the complete opposite opinion of that. I don't think he'll struggle at all. I think he's going to be a key to Australia doing well. I think they will do well in this World Cup. It's one of those things, how you deal with low points in your career, controversies. So that's exactly my point now. You're a fast bowler. You have to bowl to David Warner. What are the 3 things that you need to do to get him out? Tamper the ball a little bit and get it to reverse. That's it. No, it's very difficult. I think the one thing you hope as a bowler, as a new ball bowler early on, that ball swings a little bit. If it swings, I mean, you have a chance against most batsmen, but particularly left-hander as a right-arm bowler who swung the ball in. India has, purely talking for India, okay, Bumrah is a little bit different, but, Shami, most seam bowler, Bhuvi is the guy, who swings it in, can shape the ball away. But if there is some swing on offer and you get it right to him earlier on, you always have a chance like any other batsman. But credit to him that he actually worked hard at his game, and he's one of the first names on that Australian team list in all formats. Absolutely. While Bumrah targets the shoes, it's time for us to target a short break. Meanwhile, for more on the Indian T20 League and the sporting world, don't forget to log on to www.bodogindia.in. Welcome back to the LBW show. This segment is called Caught and Bowl. And we have a special event for you today. It's called the LBW Awards function, and to host this function we have somebody really special. Please welcome
Hello, hi guys, welcome to LBW Awards. I am your host and this show is brought to you by चौरसिया पान मसाला. अच्छा, ऑडियंस से यार. ये ऐसे देख रहे हैं जैसे मतलब स्पेशल नहीं, वो अलग तरह का स्पेशल था. आई एम गोल्डे टाइप सो. आप ऐसे देख रहे हो तो अंपायर नो बॉल को नहीं देखता जैसे आप मेरे को देख रहे हो यार. और यूं लग रहा है आपने सुशी ऑर्डर किया और सत्तू आ गया हो क्या. व्हाट इज दिस. नहीं यार, हमें बोला गया था कि एक एक्सपेंसिव क्लासी आदमी आने वाला है, तो आप तो शैंडेलियर लग रहे हो. नहीं मतलब एक्सपेंसिव हम है, सोना पहन के आए, क्लास 12th क्लास पास है और क्या चाहिए. और मैं आपको बताऊं, ये आपको एक्सपेंसिव आप कर रहे हो. बैंगलोर टीम मैनेजमेंट ने एक्सपेंसिव लोग लिए, क्या हुआ. एक्सपेंसिव तो कुछ नहीं होता, एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, मजा आने चाहिए थोड़ा यार. अच्छा सर, आपने फिर पहले होस्ट किया है कुछ अवार्ड? आप एमसी है? नहीं, एमसी नहीं है, आई एम बीसी. भैया चौरसिया, हाय, आई एम योर होस्ट. पहले मैंने नहीं किया, मैंने इन लोगों को बताया, एलबीडब्ल्यू अवार्ड्स वालों को मैंने इनको कहा कि देखो मैंने परफॉर्म नहीं किया पहले, दिस इज माय फर्स्ट टाइम. इन्होंने कहा जिन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया, उनका पहला टाइम है, तो मैं आ गया हूं यहाँ पर. सर जी, आपने एक भी मैच देखा है इंडियन टी20 लीग का? मैंने सारे मैच देखे. इनफैक्ट मैंने फाइनल देखा. हाँ. जो लोगों को ट्रॉफी दे रहे होते, ट्रॉफी कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है शादी की मिलनी चल रही है, सब लोग मिल रहे हैं, टोपियां पहना रहे हैं. टोपी पहनाने का मैच होता है क्या. तो मैंने कहा कि असली अवार्ड यहाँ एलबीडब्ल्यू अवार्ड्स होंगे, प्रेजेंटेड बाय चौरसिया पान मसाला. जी हाँ, और ये कमाल की चीजें यहाँ पे हम लोग करेंगे मिलकर. चलो ये बात तो ठीक है, आपने अवार्ड और कहा, चलो शुरू करते हैं. हमें करना क्या है फिर? देखिए, सिंपल सी बात है, 3 नॉमिनेशन मैं आपको दूंगा. आप लोग क्योंकि जानते हैं क्रिकेट को ज्यादा, मैं भी जानता हूँ लेकिन मेरे से थोड़ा ज्यादा जानते हैं, तो आप डिस्कस करेंगे और आप बताएंगे कौन विजेता है. जी हाँ, ये है एलबीडब्ल्यू अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय चौरसिया पान मसाला. ये होस्ट करने वाले हम जूरी हैं. We'll have to do some mental preparation, so we'll be back soon. Meanwhile, you can like and follow us on our Facebook page, The Bodog Life, and on Twitter we are at The Bodog Life, and on Insta we are at Bodog Sports. बहुत बहुत स्वागत है आपका. ये है चौरसिया पान मसाला प्रेजेंट्स एलबीडब्ल्यू अवार्ड्स. ये वो अवार्ड शो है जहां पर कि नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर जिनको आप लोगों ने सिर्फ गाली दी, हम लोग देते हैं ताली. यानी कि प्लेयर्स के नाम लूंगा मैं और डिसाइड करेंगे विक्रम भाई और अजीत भाई की किसको मिलना चाहिए अवार्ड. आप लोग तैयार हैं? Absolutely. तो आइए चलते हैं हमारी पहले नॉमिनेशन की तरफ. एंड द कैटेगरी इज बेस्ट गली क्रिकेटर इन अ टी20 टूर्नामेंट. यानी कि वो प्लेयर जिन्होंने इंटरनेशनल टी20 टूर्नामेंट खेला लेकिन बिल्कुल गली स्टैंडर्ड पर. एंड द नॉमिनीज आर Ashwin for gully level marketing, Yusuf Pathan for consistent catch dropping, and Kuldeep Yadav 4 wickets in 9 matches with average of 71.5. Guys, what do you think? I think it's a no-brainer. No, this one I think it's. I think so. Yeah. All three are sort of competition to each other. It's competition, but if you look at the gully cricket framework, and you are from Mumbai, so you know box cricket also very well. I wish I had done it once. So, Ashwin. So the award for best gully cricket in T20 goes to Ashwin. लेकिन अश्विन हमारे पास आ नहीं पाए, इसलिए us lose आए. Win lose. Please welcome the biggest fan of Punjab, us lose. आइए, please come. Yeah, great round of applause. Well done. कब ले आइएगा? Congrats. कब ले आइएगा? Well done. Well deserved. वाह. दो शब्द अगर आप कहना चाहें जो जनता है हमारी. So I would like to thank my captain because पंजाब and राजस्थान का मैच कोई नहीं देखता अगर अश्विन वो मार्केटिंग नहीं करता. And because of him, all Punjab matches watched by everyone across the world. So I'm happy. जल्दी चलाइए, पंजाब के प्लेयर बाहर निकल के आपको मारेंगे. आप प्लीज दिस वे. थैंक यू. कैसे लोग भेज रहे हो यार आप लोग यार गाइस. व्हाट आर वी डूइंग? खैर, अब अगली कैटेगरी है अच्छे दिन आएंगे अवार्ड्स. यानी कि वो टीम्स जो सिर्फ इस उम्मीद पर खेल रही है कि कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे. एंड द नॉमिनीज आर बैंगलोर, पंजाब, कोलकाता. गाइस, अजीत, कलकत्ता के तो अच्छे दिन आ चुके हैं इन द पास्ट. पंजाब का भी प्रॉब्लम है क्योंकि ओनर का ही कोई मेजर इशू है अभी, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है. बट मेरे हिसाब से लगता है कि बेंगलुरु के आ सकते हैं. मुझे नहीं लगा था इतना डिस्कशन की जरूरत है. आई थिंक जब मैं कह रहा था ये अवार्ड जल्दी दे सकते हैं, आई थिंक बैंगलोर क्वालिफाई करता है. जरूर आएंगे, उनके पास प्लेयर्स है, उम्मीद करेंगे आए, जल्दी आ जाए अच्छे दिन. As the master says. बैंगलोर. So guys, the award for अच्छे दिन आएंगे in T20 goes to बैंगलोर. उनके सबसे बड़े फैन जो हमारे शो में भी आते पहली बार
और काफी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से उनका नाम प्रोटॉन होगा, इतने पॉजिटिव है। उनके लिए प्लीज जोरदार तालियां। आदित्य जी प्लीज। आदित्य जी, अब जब पहले एपिसोड में मैंने आपको देखा था बहुत पॉजिटिव लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि जो टीम जीतेगी इस बार बैंगलोर जीतेगी। मैंने सुना है आप सफेद टी शर्ट पहन के आए थे जो गुस्से में लाल हो गई है, क्या सच है? सच है, लेकिन कोई तो ट्रॉफी आई है कैप्टन के पास, नहीं तो हमारे पास आई है। अब जुलाई में एक और ट्रॉफी वो उठाएंगे और अगले साल कप नम दे। क्या बोला आपने? अगले साल कप नम दे। अच्छा, मुझे लगा कप रख दे। मुझे लगा दूसरे में। थैंक यू सो मच आदित्य जी। नहीं, वो हम रख देंगे अगली बार। बड़ बोले लोग हैं, इसीलिए हारते हैं लोग। और हमारे वो दर्शक जो अभी अपने मोबाइल फोन में देख रहे हैं लेकिन शाम के टाइम पर टीवी देखेंगे, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को काफी पसंद आएगी ये कैटेगरी। ये कैटेगरी है बेस्ट प्लेयर इन अ रियलिटी टीवी मोड, यानी कि वो प्लेयर या अंपायर जिन्होंने T20 को दिए उनके रियलिटी टीवी एक्सपीरियंसेस। एंड द नॉमिनीज आर MS धोनी, जो अंपायर से इतने नाराज हो गए कि ग्राउंड में घुस आए। अंपायर नाइजल लॉन्ग, जिन्होंने दया बनकर दरवाजा तोड़ दिया। और आंद्रे रसल, जिन्होंने टीम मैनेजमेंट का रायता फैलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गाइस, किससे दुश्मनी करना चाहेंगे आप लोग? Interesting options. Interesting options. Very difficult. Normally MS धोनी का नाम आता है तो अवार्ड उनको दे देते हैं, लेकिन I think इस बार हम अवॉइड करेंगे। Yeah, I think Nigel Long is a interesting one. I think interesting। 5,000 रुपए KSCA को मिले भी। बिल्कुल, और अंपायर से हमने कभी सुना नहीं है, तो I think it's right to go with him. I think we'll go with Nigel Long। इन्होंने नो बॉल कोई क्रॉसिंग तो नहीं की थी? नहीं। वाइड गलत तो नहीं दी थी? फिर इज द राइट गाय। सो द अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेयर, इन फैक्ट अंपायर इन अ रियलिटी टीवी मोड इन T20 goes to नाइजल लॉन्ग। और कौन है रिप्रेजेंटेटिव उनका? भैया, ये धोनी के लिए नहीं था, ये नाइजल लॉन्ग के लिए था। नाइजल लॉन्ग को कैसे दे सकते हो ये अवार्ड? एज अ कैप्टन, जब अंपायर ने गलत डिसीजन दिया, धोनी स्टूड फॉर द टीम। एज अ फैन, आई एम गोइंग टू स्टैंड फॉर धोनी। इफ आई मे, आई विल टेक द अवार्ड। अब इतना बोल दिया, खड़े क्यों ले लो अवार्ड? Well, थैंक यू। Well done। बड़े अग्रेसिव लोग हैं कसम से। नहीं हारे हैं ना, ये एटीट्यूड से लग नहीं रहा है हारे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। चौरसिया पान मसाला प्रेजेंट्स LBW अवार्ड्स। और ये अवार्ड देते हुए थोड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि आखिरी अवार्ड आज की शाम का है ये, और अवार्ड का नाम है झलक दिखला जा अवार्ड। यानी कि वो प्लेयर जो ऑक्शन में महंगे बिके लेकिन पिच पर बिल्कुल नहीं टिके। एंड द नॉमिनीज आर सिमरन हेटमायर, 4 करोड़ 20 लाख में बिके, 5 मैचेस 90 रन और स्कोर किए 75 आखिरी मैच में, यानी कि 4 मैचेस में 15 रन। टिम साउदी 1 करोड़ में बिके, 54 बॉल फेंकी, 118 रन, 1 विकेट, खेले सिर्फ 3 मैच जिसमें बनाए 9 रन। ईशान किशन 6 करोड़ 20 लाख, 101 रन इन 7 मैचेस। क्या कहते हैं आप लोग? अजीत, अगर वैल्यू की देखे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस वक्त, और उन पे होप्स भी बहुत थे। एग्जैक्टली। तो मैं हेटमायर से जाऊंगा, अगर आई थिंक ओके विद इट। आई एग्री। वैसे एक चीज जो मैंने नोटिस किया, आप लोगों ने भी की होगी, विक्रम भैया खुद कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जो अजीत भाई ले रहे हैं उस पे बोल रहे हैं आई विल गो विद इट, यानी कि दुश्मनी सिर्फ अजीत भैया की हो रही है। खैर, इट्स योर चॉइस, आई विल आल्सो गो विद यू अजीत भैया। सो द अवार्ड फॉर झलक दिखला जा गोस टू सिमरन हेटमायर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कौन आया लेने के लिए अवार्ड प्लीज? सर और कौन आएगा, हम एक ही है। Congratulations। ये ऐसा ही चेहरा बनाया था हेटमायर ने जब कल कॉल किया था। उसने बोला फ्लॉप तोल में जो सीडी बेच रहे थे वो पहले मैच में बेच देता तो हर मैच में 90 बनाते। उन्होंने खरीद ली थी, खेले भी थे और 90 भी बनाए। अगले साल कप नम दे। थैंक यू। ये वही आदमी जो पहली बार आता है डा डा करने लगा होता, सडनली एक्सेंट चेंज सा हो गया। टीम चेंज तो नहीं करने वाला है। खैर, बहुत दुख के साथ चौरसिया पान मसाला प्रेजेंट्स LBW अवार्ड्स को नमस्ते करते हुए मुझे दुख हो रहा है। तो 6 हफ्तों में बहुत मजे हुए, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस अवार्ड को BC यानी कि भैया चौरसिया न करें, बल्कि वो करें जिन्होंने शो की शुरुआत की थी। गाइस, क्या बात है, क्या बात है। Mr. Chaurasia ji is the best MC I have seen in my life. You know, after 6 weeks of fun, dhamal and masti, it's time to say goodbye. I really enjoyed with all the characters that Chaurasia ji played, and all the insights from Ajit Agarkar. But the best part was the passionate fans who really believed every time that their team will win. So the World Cup is coming soon, so don't forget to download the Bodog Cricket app to play fun prediction games at the World Cup as well. Enjoy.